गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो है उसको अब से प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहा जाएगा। अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय भी जो है वो रीनेम किया गया था प्राइम मिनिस्टर जो है म्यूज़ियम को, जो कि तीन मूर्ति भवन था। और नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। 1964 में इसको बनाया गया था। तीन मूर्ति हाउस दिल्ली में ये लोकेटेड है। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके प्रेसिडेंट होते हैं और इस जो है जो भी की डिसीजंस होते हैं उसको जो है एनएमएमएल सोसाइटी जो है वो लेती है। इसके चार मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं: मेमोरियल म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑन मॉडर्न इंडिया, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ और नेहरू प्लेनेटेरियम। अब जो ये बिल्डिंग है तीन मूर्ति, ये एडविन लटेंस जो है उन्होंने बनाई थी। तीन मूर्ति हाउस को, उसको पहले कहा जाता था फ्लैग स्टाफ हाउस। ये एक ऑफिशियल रेजिडेंस है। कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के होते थे उनका पहले घर होता था ये, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उसको ऑफिशियल रेजिडेंस जो है अपना बनवा लिया था। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय क्या है। तो ये इसको तो पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था रादर। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक ट्रिब्यूट है हर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अभी तक देश की आज़ादी से अभी तक रहे हैं। हर प्राइम मिनिस्टर ने कैसे अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया है ये उसको रिकॉर्ड रखता है। और फ्यूचर के भी जो लीडर्स होंगे उनके लिए भी स्पेस छोड़ी गई है ताकि इसको में जो है वो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है पुणे की IUCAA ने डेवलप करके जो है वो अभी इसरो को डिलीवर कर दिया है और इसको आदित्य L1 मिशन में जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन जो है वो एक प्लान्ड कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर कोरोना जो होता है आपका, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है सन का, उसको स्टडी करेगा। और वो जो है इंडियन मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने 2008 से प्लान किया हुआ है, लेकिन 2008 से प्लान किया हुआ है 2023 आ गया है। तो धीरे धीरे इसके हमने जो है मिशन ऑब्जेक्टिव्स को भी बहुत ब्रॉड कर दिया है। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेटरी बन जाएगा ये सन और उसके आसपास के स्पेस एनवायरनमेंट की। L1 या फिर लेग्रांज पॉइंट में इसको जो है वो प्लेस किया जाएगा। लेग्रांज पॉइंट का होता है जहाँ पर मून आई एम सॉरी अर्थ और जो सन है उनकी जो ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करती है, तो उसको हम लेग्रांज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल रहता है कोई भी आप अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो तो। अब ये SUIT है क्या? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज जो सोलर रेडिएशन है उसको मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा, फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को स्टडी करेगा सन के, और कि अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे प्रोसेसेस चलते हैं। इसरो जो है इसको मेजर करने वाला है और इसको देखेगा कि कैसे जो है सोलर स्पेक्ट्रल इरेडियंस जो है वो जो भी इससे रिलेटेड जो है आपका जो है केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन और ओजोन जो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में के साथ कैसा करता है ये सोलर स्पेक्ट्रल इरेडियंस, उसको मेजर करने वाला है। अब सूट की जो है यही ऑफ कोर्स खासियत भी है कि ये सोलर रेडिएशन मेजर करेगा। यूवी रेडिएशन जो है हमारी कितनी अर्थ पर आ रही है, किस टाइम पर कितनी आती है, उसको मेजर करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नासा के ऑफिशियल ने भी रिसेंटली बोला है कि इंडिया जो है उसको आर्टेमिस टीम का पार्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ की एक जो है वो ग्रुपिंग होनी चाहिए जो कि सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं। ठीक है, अब नॉन एक आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसको सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को गाइड करने के लिए जो है वो नासा ने लॉन्च किया था। और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ कोर्स इसको मैनेज कर रहा है 2020 से। 7 कंट्रीज़ जो है वो इसके मेंबर नेशंस हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे और एक्सपेंड कर लिया गया है। यहाँ पर इसके मेंबर नेशन कंट्रीज़ जो है वो मेंशन की गई हैं। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कोऑपरेशन करना आउटर स्पेस ट्रीटी के जो है प्रिंसिपल्स के हिसाब से, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना अमंग्स मेंबर स्टेट्स, इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर करना। ठीक है, फिर जो है आपके कोई भी अगर जो हमारे जो मेंबर कंट्रीज़ होंगी आर्टेमिस अकॉर्ड्स की, वो आपस की कंट्रीज़ के जो है अगर पर्सनल आउटर स्पेस में जो है उनको इमरजेंसी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो भी देंगे। ठीक है, साइंटिफिक डेटा शेयर करना ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, और कोई भी ऑर्बिटल जो डेब्री जिसको हम स्पेस डेब्री कहते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर भी कॉपरेट करना।
तो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम आपको पता ही है, मून तक पहुंचने का प्रोग्राम है बाय ईयर 2024। ह्यूमंस को मून पर ले जाने का ये प्रोग्राम है नासा का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली 20 लाख का जो है वो मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो इम्पोज किया है मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस नहीं की थी एनबीएफसी नॉर्म्स की। तो एनबीएफसी क्या एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस देती है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स भी करती है, स्टॉक्स भी करती है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, जो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ इशू करती हैं, ठीक है, या फिर बाकी की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी की तरह जो होती हैं। अब ये इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इसलिए इनको हम एनबीएफसी कहते हैं। बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं, लोन्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़, टीएफसीज, रिटायरमेंट प्लानिंग एटसेट्रा, और ये जो है मनी मार्केट में भी स्टॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इनको रेगुलेट जो है वो आरबीआई ही करता है। आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है इनको लाइसेंस देने के लिए। ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम जो आरबीआई का होता है उसका पार्ट नहीं होते ये, और ये ऑफ कोर्स इसलिए फिर ये चेक भी नहीं इशू कर सकते। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड करेंट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की, वो भी इनको अवेलेबल नहीं होती, और इनके ऊपर सब स्ट्रिंजेंट और सब्सटैंशियल रेगुलेशंस नहीं होती अनलाइक बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नापफिट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नापफिट जो है उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ रेज किए हैं मेडन इशुएंस ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स के थ्रू। नैपफिड को 2021 में बनाया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बॉन्ड्स के थ्रू, डेरिवेटिव मार्केट्स के थ्रू, उसके लिए जो है नैपफिड को जो है बनाया गया है। इसको आरबीआई ही सुपरवाइज कर रहा है, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब डीएफआई क्या होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, या तो ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं, मीडियम से लार्ज जो है टर्म्स की ये फंडिंग देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनएसडीसी फ्रेमवर्क इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन साइन किया है, जिसके अंदर होगा क्या कि हमारी कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइक जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, इसको अचीव करने में जो है ये हमें हेल्प किया जाएगा यूएन डेवलपमेंट सिस्टम द्वारा। और 6 आउटकम एरियाज रखे गए हैं, हेल्थ एंड वेलबींग, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी एजुकेशन एट्सेट्रा, और इसको कोलैड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और यूनाइटेड नेशंस द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, असम राइफल्स, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो मणिपुर में मैती एरियाज़ के लोग हैं वो सप्लाईज ब्लॉक कर रहे हैं असम राइफल्स की, क्योंकि वो आपको पता है असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया है साउथ मणिपुर में। तो असम राइफल्स क्या है, वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है, और इसका टास्क क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नॉर्थ ईस्ट में, और इंडो म्यांमार बॉर्डर को जो है वो गार्ड करना। लगभग 63,000 पर्सोनल और 46 बटालियंस इसका पार्ट है। इसका यूनिक फीचर ये है कि अकेली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो होम मिनिस्ट्री के पास होता है, लेकिन जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इसका इंडियन आर्मी के पास होता है, मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होता है। सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस फोर्स का वो एमएचए डिसाइड करता है, लेकिन इसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, डेपुटेशन, सब आर्मी डिसाइड करती है। इवन इसकी हेड जो इसके हेड होते हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के इंडियन आर्मी के ही पर्सोनल होते हैं। ये अकेली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में जो रियल सेंस में पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ और रेजिमेंटेशन है वो एक्चुअल में इंडियन आर्मी की जो है लाइंस पर बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने G20 नेशंस के लीडर्स को लिखा है कि अफ्रीकन यूनियन को भी जो है फुल मेंबरशिप दे दी जानी चाहिए G20 की, और लाइक अदर कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी जो है वो ऑलरेडी आपको पता है G20 में एक सेपरेटली रिप्रेजेंटेड है, इसलिए इनको भी जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। अब इसका अगर हम देखें तो इंडिया क्यों ऐसा कर रहा है, इंडिया अपने आप को एज अ लीडर ऑफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो पुश करना चाहता है, और इंडिया चाहता है ऑफ कोर्स कि यूएनएससी की जो रिफॉर्म्स हैं उसमें भी अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का उसको जो है वो सपोर्ट मिले, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 55 मेंबर स्टेट्स की, बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है। इथोपिया के अदिस अबाबा में इसका जो है वो हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था 2002 में ऑफिशियली, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है। इसको पहले कहा जाता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी,
ठीक है। अब अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है वो 1963 में बनाया गया है, लेकिन 1999 में, फिर 2000 में, 2001 में और 2002 में जो है सिरते डिक्लेरेशन के बाद जो है अफ्रीकन यूनियन जो है वो बनाया गया और जो है इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया डरबन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2000 रिपोर्ट 2023, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी जो है उन्होंने कहा है कि जो है और अदर उन्होंने जो है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ की है। ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जो कार्गो रिलीज टाइम को जो है कस्टम स्टेशन के ऊपर जो है मेजर कर रहा है कि किस तरह से डोमेस्टिक क्लियरेंस दी जाती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को। तो उसके बेसिस पर जो है कार्गो या पोर्ट्स हैं उनको जो है रैंकिंग की गई है। सिर्फ पोर्ट्स ही की नहीं, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस की, इनलैंड कंटेनर डिपो की, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की, इन सब की भी जो है वो स्टडी की गई है। अगर हम देखें तो तीन जो है वो कैटेगरीज के ऊपर जो है वो रैंकिंग दी जा रही है। प्री अराइवल प्रोसेसिंग, क्योंकि माल कैसे आता है उसकी प्रोसेसिंग, उसके आने से पहले किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है। रिस्क बेस्ड फैसिलिटेशन ऑफ कार्गो, फिर बेनिफिट्स ऑफ ट्रस्टेड क्लाइंट प्रोग्राम। तो कार्गोज जो तीनों के तीनों जो है फीचर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको पाथ टू प्रॉम्प्टनेस में जो है वो की तरफ रैंक किया गया है। और उनको जो है वो ये देख अगर वो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के जो टारगेट्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं तो उनको पाथ टू प्रॉम्प्टनेस की जो है वो फीचर्स में डाला गया है। मतलब ये कहा गया है कि वो पाथ टू प्रॉम्प्टनेस वहाँ पर अगर कार्गो आएगा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है फोकस रखा गया है एक्सपोर्ट रिलीज टाइम के ऊपर। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Nehru Memorial Museum and Library. This topic is important for your governance section. Union Culture Ministry has recently announced that Nehru Memorial Museum and Library would now be called the Prime Minister's Museum and Library Society. This has come after Pradhan Mantri Sangrahalaya was inaugurated by the Prime Minister in the premises of Teen Murti Bhavan in 2022. And this Nehru Memorial Museum Library Society is an autonomous institution under the Ministry of Culture, and it was established in 1964. It is located in Teen Murti House of Delhi. That is the official residence of the first Prime Minister of India. And currently, the Prime Minister of India is the president of NMML, and the NMML Society is responsible for key decision making of the memorial. Okay, so what is Teen Murti House? What is its history? So, in 1929 and 1930 period, Edwin Lutyens built when he was building the imperial capital. Teen Murti House was built for as the Flagstaff House, and it was the official residence of the Commander-in-Chief of the British Armed Forces in India. And in 1948, it became the official residence of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. So, what is Pradhan Mantri Sangrahalaya? It was launched in 2022 as a tribute to every Prime Minister of India, to recall how every Prime Minister since independence has made certain contribution to the development of our nation, and it is recognizing the contributions of all 14 prime ministers, and it has also left ample space for the future leaders as well. So the next topic is Solar Ultraviolet Imaging Telescope. This topic is important for your science and tech section. So Solar Ultraviolet Imaging Telescope has been developed by Pune's University Center for Astronomy and Astrophysics, and it has been delivered to the Indian Space Research Organization, which will be later integrated with the Aditya L1 mission. So what is Aditya L1 mission? It is a planned coronagraphy spacecraft which will study the solar atmosphere, that is the outermost part of the sun, the solar corona, and is the first dedicated Indian mission which will be observing the sun, and is intended to be a because it was actually planned since 2008, so the time has passed and now this objective of this mission has been extended, or and it has been made very comprehensive. Now it will be conducting a comprehensive observatory of the sun and the space environment. So it will be placed in the Lagrange 1 point, which is the point where the gravity of both sun and the earth counteract each other, and that's why any object placed in this point becomes stationary and good for observation. So what is SOOT? So SOOT is basically an instrument which will measure and monitor the solar radiation which is emitted in the near ultraviolet wavelength range. It will map the photosphere and chromosphere of the sun, and it will help us to understand the processes involved in the transfer of mass and energy from one layer to another. It will also allow ISRO to measure and monitor the specially resolved solar spectral irradiance, which governs the chemistry of oxygen and ozone in our atmosphere, in our stratosphere.
So what is the significance of suit? Of course, it will be measuring the solar radiation from hard X-ray to infrared, as well as the measurement of particles in the solar wind. And this will also help us to measure the UV radiation, which is hazardous for our skin. Okay, so the next topic is at Artemis Accords. This topic is important for your science and tech section. A top NASA official has recently said that India needs to be a part of the Artemis team, which of course will bring the like-minded countries together on civil space exploration. So Artemis Accords are part of the 21st century accords, which are non-binding set of principles, and they are guided they are designed to guide civil space exploration, and the aim is to ensure maintenance of a safe and predictable outer space environment. So the US Department of State, in coordination with NASA, has established these accords in 2020. uh, the seven founding members were there initially, but later on new members have joined it also. So the purpose is to have the space cooperative activities in consonance with the outer space treaty, and the aim also is to commit to the broad dissemination of information regarding the respective national space policies. There is also a goal of interoperability between the member states, and also to give necessary emergency assistance in the times of need to personnel who are in outer space of the member countries. There is also a component to mitigate the space debris or the orbital debris, which generally happens when the spacecrafts are launched or the satellites go defunct. Okay, so Artemis program, you all know that it is the program of NASA to land humans on the moon by 2024. So the next topic is non-banking financial company. This topic is important for your economy section. RBI has recently imposed 20 lakh rupees monetary penalty on Mannapuram Finance for non-compliance with certain provisions of NBFCs. So NBFC is a company registered under the Companies Act, and it gives the loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities, etc., which are issued by the government or local authority or other marketable securities. And it also offers the banking services like loans, credit facilities, etc., but it cannot have a banking license. So that's why they're not allowed to take traditional demand deposits, but they are regulated by the RBI. RBI also has the authority to issue licenses to them, but they still, of course, cannot accept demand deposits. They do not form part of the payment and settlement system. That's why they cannot issue even the checks, and they do not have the luxury or the comfort of deposit insurance facility, which is given by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. And unlike banks, NBFCs have little uh, less or comparatively less stringent and substantial regulations. So the next topic is NAPFID. This topic is important for your economy and governance section. So recently, National Bank for Financing Infrastructure and Development has raised 10,000 crores by the maiden issuance of listed bonds. NAPFID was set up in 2021 by an act of parliament, and the aim is to give long-term non-recourse finance for infrastructure development, and it is regulated and supervised by the RBI as an all India financial institution. So what is a development finance institution, which is like this NAPFID? So these are basically organizations which are owned by the government or public institutions, and they provide funds for infrastructure and large scale projects. Generally, the medium to long term financing is given by these development finance institutions. And the next topic is Government of India UNSDC framework. This topic is important for international relations. So recently, Niti Aayog and United Nations have signed a Government of India and United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for the years 2023 to 2027, and the aim is to ensure that that our country achieves the sustainable development goals, promote gender equality, youth empowerment, and human rights. So there are certain six outcome areas based upon which the support would be provided, like health and well-being, nutrition and food security, quality education, etc. And there is also a specific focus on sustainable development goal localization and south-south cooperation. So Government of India and the United Nations would be co-leading this effort.
So the next topic is Assam Rifles. This topic is important for your security section. So Meeti people in the South Manipur area, they have recently blocked supplies for the camps of Assam Rifles. Assam Rifles is one of the 6 central armed police forces under the administrative control of Ministry of Home Affairs, and it is tasked with maintenance of law and order in the northeastern region. It also guards the Indo-Myanmar border. It has about 63,000 personnel and 46 battalions. It is the only paramilitary force with a dual control structure. The administrative control of the forces with the Home Ministry, whereas the operational control is with the Indian Army. The salaries and infrastructure of the forces provided by the Home Ministry, but the deployment, posting, transfer, deputation of the personnel is decided by the Army. And it is also commanded by a Lieutenant General from the Indian Army. It is the only central paramilitary force in real sense, and its operational duties and regimentation are also on the lines of Indian Army. So the next topic is G20 membership for African Union. This topic is important for our international relations. Prime Minister Modi has written to the leaders of G20 nations that African Union must be given the full membership of G20, and the idea of this uh, inclusion of African Union in G20 originated after the Voice of the Global South Summit, uh, which was conducted in January 2023, in which about 54 countries participated from Africa. And uh, India is basically pitching itself as a leader of developing and underdeveloped countries through this move, and it is also in sync with India's aspiration for permanent membership of the UNSC, because of course Africa has 54 votes. And what is African Union? It's an intergovernmental organization which consists of 55 member states, and it's a continental union basically. It was officially launched in 2002, but it is a successor to the organization of African Unity. Its headquarters is located in Addis Ababa, that is in Ethiopia. So, if we look at the origins of it, then we have to trace it back to 1963, when the Organization of African Unity was formed or established, and later on with Sirte Declaration in 1999. Motive or the objective was shown that we need to establish African Union, and only then in 2002 in Durban, South Africa, this African Union was launched. So the next topic is National Time Release Study Report 2023. This topic is important for our governance and economy section. Recently, the chairman of CBIC along with members of the board have released the National Time Release Study 2023 report, which is a performance measurement tool, and it basically quantifiably measuring the cargo release time of the custom stations. It is also measuring the domestic clearance in case of imports, and departure in case of exports. So it has not just studied the ports, but the air cargo complexes, inland container port depot, and even the integrated checkposts. So what are the highlights of this report? So basically they have found that we need to divide the our study in the three important pillars: pre-arrival processing, risk-based facilitation of cargo, and benefits of trusted client program. And based upon that, it has said that cargoes wherein all these three features under the path to prominence are combined, then they have achieved the National Trade Facilitation Action Plan target across all port categories. It has also laid a greater focus on measurement of export release time. Okay, so these were our topics for today. Of course, we already have more topics, but because we had so many topics to discuss today, so I have only focused upon the some topics or out of these total topics on which I thought that you people need some insights from my side. Otherwise, most of the topics are just fact based, which you can give a glance, and you just need a quick reading and you would be understanding the topic. So I've only discussed the topics which are a little tricky, or I thought that you may need my a certain insights of mine. So that's why we have not covered the entire topics of the PDF file today. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.